rooms. Because Jamiat or Darul Uloom is established with the understanding that we have place for scholars, we'll have rooms for them to live, we'll have toilet, bathroom facilities to fulfill their needs. We'll have kitchen for them, we'll prepare food for them, we'll hire teachers, we'll pay their salaries so they can teach them. Without that setup, how would we practice upon this hukm of Allah Azza wa Jal that a group must go out and study and come back? Now, without these facilities, is there a way to practice? So this establishing madrasas, Darul Ulooms, Jamiat are derived from this verse of the Quran. ये इस आयत से ये सारा मफहूम और मजमून, इसको मैं यूं कर लूँ, ये बहुत ट्रबल कर रही है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कि तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई, that Muslim community, it's their responsibility. It's not Maulana's responsibility. Mufti, Alim, Peer, no. Ummah. ये उम्मत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाएं. Ulama will guide you, they will help you because they are the experts of this field. So you take technical support from them. But the duty is of the ummah, not of certain individuals. क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हुक्म उम्मत को दिया है, मौलाना लोगों को नहीं दिया. लेकिन मौलाना बेचारे अमल करते हैं, इसमें उम्मत थोड़ा बहुत चंदा दे के पतली गली से निकल जाती है. कौन इस्टेब्लिश करता है जामियात को, दारुल उलूमों को? ये उलमा ही करते हैं. दे प्रैक्टिस प्रॉपर्ली ऑन दिस आया करीमा. To learn ilm deen according to the need of the person is फर्दुल ऐन. यानी जितनी जरूरत है ना आपको उतना इल्म हासिल करना, ये फर्दुल ऐन है, भी हर एक पर फर्ज है. But to become a complete आलिम दीन is फर्द किफाया. मैं ये फर्द किफाया समझाता हूँ आप. फर्द किफाया is that if no one does from the whole community is sinful. But if one person does it, he has fulfilled that responsibility on behalf of everyone and he saved the whole community from a major sin. Now imagine that one child that leaves your community and he goes to Jamia, Darul Uloom, he stays there, he studies. He has saved all of you from major sin. अगर और कोई भी वो काम ना करता ना तो उसका यही एक काम बहुत बड़ा है कि उसने सारों को बड़े गुनाह से बचा दिया. So we can't afford not to have Jamiat, Darul Ulooms, and we can't afford not to send our children. कुछ तो जाए ना. There must be at least some who can go and study. The masalas of need, for example, namaz, salah is farad upon you. You need to have the knowledge about salat.
If you are a businessman, you need to have knowledge about the business rules of Sharia. That's fard ain. Upon every businessman, it is fard that he must learn the ilm of business, ilm of trade. And women, they go through hairs and nifas and those situations. So they must learn those masail of tahara. तो जो जिसकी कैफियत है, जो जिस हालत से गुजरता है, उसको वन आलिम दीन is heavier on shaitan than 1,000 worshippers. 1000 बंदे जो इबादत करते हैं ना, पक्के नमाजी, वो शैतान पे इतने हैवी नहीं हो सकते जितना एक आलिम दीन शैतान पे हैवी हो जाता है. Because he is alim, he knows Quran, he knows hadith, he knows the tricks of shaitan. He warns people, he educates them, he informs them, he tells them. So there is a big loss to shaitan when one person becomes an alim deen and comes back to the community. ये शैतान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि अब ये तो मसले बताएगा, ये तो हलाल हराम बताएगा, ये तो लोगों को बताएगा ये नहीं करो ये करो. इससे पहले मेरा राज था. Before this alim came in the community, I was ruling them, and now this alim came, now he will rule them. तो शैतान तक का काम तो बंद हो गया ना. इसलिए हजूर ने फरमाया one alim is heavier on shaitan, stronger on shaitan than 1,000 worshippers. वो 1000 जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं और तहज्जुद पढ़ते हैं और दिन रात वजीफे पढ़ते हैं लेकिन आलिम नहीं है, वो इतना नुकसान शैतान को नहीं पहुंचा सकते जितना एक आलिम दीन शैतान के मिशन को डिस्ट्रॉय करता है. And for this reason, because the wujood of an alim has a great benefit, for this reason the animals make dua for an alim. The fish in the water, they make dua for an alim. Birds in the air, they make dua for an alim. The question is, why should they make dua? What benefit fish is getting from alim? I mean, if we say people make dua for an alim, so you can understand, because people benefit from an alim. They listen to his bayan, maybe they read his fatwas, his books, his articles. So they are benefiting from him. But वो परिंदे वो कब आते हैं बयान सुनने मौलाना का? The fish in the water, what benefit are they getting from an alim deen? So if they're not getting any benefit, why must they make dua for him? दुआ तो उसके लिए करते हैं ना जिससे कोई फायदा पहुंचे. अब मछली को क्या फायदा इस मौलाना से, इस मुफ्ती से? The ulama ikram have written, Hazrat Mullah Ali Qari rahmatullah ta'ala has written that the birds, the fish, the animals, they know that we are getting our rizq because of ulama. Because the day ulama are not there, Qiyamah will come and our rizq will stop. तो हमारा रिस्क स्टॉप नहीं हो रहा, हमको मिल रहा है ये इसलिए कि उलमा मौजूद है. इनकी वजह से क़यामत नहीं आ रही. तो जब तक क़यामत नहीं आ रही हमको खाना मिलता रहेगा. So they benefiting from the wujud, from the existence of ulama. So they appreciate and they make dua that, oh Allah, bless this alim, bless these ulama. Because of their wujud, क़यामत is not coming.
So therefore we're getting our sustenance, we're getting our risk. कितनी बड़ी नेमत है उलमा मुसलमान उम्मत के लिए. So in this ayah karima, there is a clear indication that Muslims should establish Darul Ulum, जामिया. शुरू से भी मैंने कहा था, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि दिमाग में, दिल में ये बात बैठ जाए, ये हमको करना है. It's mentioned in Hadith Mubarak that when person dies, he leaves everything, सब पीछे रह जाएगा, except 3 things. Number 1, सदका जारिया. Number 2, beneficial knowledge, ilmun nafi'un. And number 3, pious children, waladum salihun yad'u lahu. कब्र में 3 चीजें जाएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा. All your properties, your money, your millions, your cars, your properties, buildings, there's nothing that you can take with you in the qabr. But 3 things will go with you, and they will give you the benefit in the qabr. Number 1, sadaqah jariyah, continuous charity. Money that you invest in the masjid, in the madrasa, in the Darul Ulum, put up a library for Muslims to come and study, some welfare work, rifaya ke kaam hai, maybe dig a well for some people to come and get, water from there. So isko kehte hain sadaqah jariya. That work must continue, the benefit must continue. Iska fayda qabr mein hoga. The second point mentioned in Hadith Mubarakah, beneficial knowledge that will go with you in the qabr. फायदामंद इल्म, और वो कौन सा है? If you are an alim and you taught people to become ulama, that's beneficial knowledge. If you wrote a big book, people are reading that book, benefiting, that's a beneficial knowledge. Okay, you are not an alim, but you built up a madrasa and students are coming and learning ilm deen. You made a contribution in ilm deen. That's a beneficial knowledge. You getting the sawab of that in the qabr. Maybe you sponsored and funded a student. आजकल दारुल उलूम चलाने कितने मुश्किल है. आपके दिल में आया, यार एक स्टूडेंट को मैं स्पॉन्सर करूंगा, मैं पूरा हाफिज बनाऊंगा, पूरा आलिम बनाऊंगा. You go to the principal, you say, Hazrat, tell me, what is the kharcha, what is the expense of one student per month? And he said, okay, 2,000. You say, okay, I'll pay his expense from the beginning till the end, till he graduates. 7-8 साल आप पैसे देते रहे. वो आपके खर्चे से आलिम बन गया. Maybe you not an alim, you don't know how to understand Quran and Hadith directly, but this child that you made him an alim deen, maybe he will be a grand mufti of the country tomorrow. He'll be a teacher of hundreds or thousands of ulama tomorrow. He'll be writer of books tomorrow. He'll be Shaykh al-Hadith, Shaykh al-Quran. He'll spread the light of knowledge everywhere in the world. He will go. तो लोग शायद आपको भूल जाएं,
लेकिन आपका रब नहीं भूलेगा कि तुमने क्या किया है। तुमने एक बच्चे को पूरा आलिम बनाया, उसका पूरा खर्चा उठाया। ऐसे इस तरह के काम किया करो कि पक्का पक्का इंतजाम हो जाए सदका जारिया का। एंड देन वलदुन सालिहुन यदउ लहू, pious child who makes dua for the father, for the parents। और वो pious कैसे होगा कि आप उसको सिखाएंगे। You will do his tarbiyat, you will bring him up according to Islamic values and standards। आप उस पर निगाह रखेंगे, मेहनत करेंगे उस पर, उसको अच्छा इंसान बनाएंगे, बुराई से रोकेंगे, गाली देगा मना करेंगे, उल्टी बात करेगा, गीबत करेगा मना करेंगे, नमाज में अपने साथ रखेंगे, उसको पढ़ाएंगे। सो रहा है, थका हुआ है, लेकिन कहने नहीं फजर का वक्त हो गया बेटा अब उठना है, उसको अच्छा मुसलमान बनाएंगे। So when, because you made a contribution in his being a pious person, तुम्हारी मेहनत इसमें शामिल है। वो ऐसे ही नहीं नेक बन गया, लोग ऐसे ही नहीं नेक बन जाते। इंसान तो अपनी असल की तरफ भागता है, और उसकी असल तो जानवरों वाली है। इंसान में तो जानवरों वाली आदतें हैं। वो तो फिर उसकी तरबियत होके, उसको सिखा के, उसको अदब सिखा के, उस्ताद पेरेंट्स ये सब उसको अच्छा करते हैं। अगर उसको उसकी हालत में छोड़ दें तो ये बंदरों की तरह बन जाएगा, ये गधों की तरह बन जाएगा। तो ये जो अच्छा बच्चा होता है ना, नेक बच्चा, इसमें माँ बाप की कंट्रीब्यूशन होती है, उनकी मेहनत शामिल होती है। तो इसकी नेकी का हिस्सा बाप को कब्र में मिलता है। Because he is your extension, he is your child, you left your extension behind you। He is reading namaz, he is reading durood, he is earning halal rizq, he is full of adab and respect, he follows the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, he gives neki ki da'wat, he stops people from evil। You get the sawab of that in the qabr। ऐसे बच्चे हो ना, ये बच्चे छोड़ गए आप जो मिलियन कमाते हैं लेकिन बेनमाजी, बच्चे छोड़ गए आप पीछे, डॉक्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं, नमाज नहीं आती, कुरान पढ़ना नहीं आता। अब इसके मिलियन कब्र में क्या फायदा देंगे आपको? अगर नेक होता, नमाजी होता, साले होता, सुन्नत का पाबंद होता, तो हदीस के मुताबिक इसकी दुआ कब्र में फायदा देती। सुभान अल्लाह। इसलिए पुराने जमाने के जो अमीर लोग होते थे ना, वो भी बड़े पढ़े लिखे होते थे। The rich people in olden time, they were also very educated and very smart, and they knew where to invest their money। आज बिजनेस में लोग बड़े क्लेवर है ना, ऐसे ऐसे तरीके निकालते हैं पैसा कमाने के कि बंदे की अकल हैरान हो जाती है। हम जैसों को तो भाई एक ही तरीका आता है, भाई कोई चीज खरीद लो आगे बेच दो। अभी तो इतने इतने अंदाज हैं पैसा कमाने के, समझ से बाहर है। तो लोग जो बिजनेस समझते हैं वो अपने फैसले करते हैं। they make smart choices। तो जिसमें मेहनत भी कम हो, वक्त भी थोड़ा लगे, you don't work hard, work smart, and so you get lot of money थोड़े से वक्त में।
तो लोग वो सोचते हैं, वो ऑप्शन लेते हैं। पुराने जमाने में जो अमीर लोग होते थे ना, जिनको अल्लाह ने पैसा दिया होता था, वो भी अल्लाह के रास्ते में देने में स्मार्ट चॉइसेस लेते थे। अब देखें ना, एक चॉइस ये है कि यू मेक ए देग, you eat 100, you feed 100 people, you got the sawab, but will you be getting sawab of that act tomorrow? वो एक बार अमल हुआ, उसका सवाब मिल गया, then full stop। तो वो भी अच्छा काम है, वो भी करना चाहिए, उसके भी फजाइल है। लेकिन पुराने जमाने के जो अमीर लोग होते थे, वो दारुल उलूमों में, मदरसों में इन्वेस्ट करते थे। उनको पता था इसका फायदा इतना बड़ा है, अपनी बड़ी डोनेशन इधर देते थे। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। देयर वाज ए पर्सन, ही वाज किंग ऑफ बगदाद, हिज नेम वाज निजामुल मलिक। He established a madrasa, a Darul Uloom in Baghdad, and he kept the name of that madrasa, Madrasa Baghdadiya. Sorry, Madrasa Nizamiya, because his name was Nizam. Students used to come from all over the world and study and graduate. Now let's see. ये अमीर आदमी था, पैसे वाला था। इसके पैसे ने मुस्लिम उम्मत को क्या फायदा पहुंचाया? इसने मदरसा बनाया, बड़ा शानदार, कंफर्टेबल। हजरत शेख सादी शराजी, कितना बड़ा नाम है। He graduated from that madrasa. Hazrat Imam Fakhruddin Razi, very big name in Islamic history, he graduated from that madrasa. Who's not benefiting from the work of Imam Ghazali? He studied there and he graduated from that madrasa. And who's not benefiting from the ilm and ruhaniyat of Sayyidina Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu, Ghawsul Azam? He graduated from that madrasa. वो कैसा खुशकिस्मत पैसे वाला था कि उसने पैसा लगाया और ऐसे ऐसे हीरे उम्मत को मिले कि आज तक, बल्कि क़यामत तक, उनके इल्म और रूहानियत से पूरी उम्मत फायदा उठा रही। लेकिन उनका खर्चा किसने उठाया? उनके उस्तादों की तनख्वाहें किसने दी? उनके खाने का बंदोबस्त किसने किया? निजामुल मलिक ने। ये होता है स्मार्ट चॉइस। जिनकी समझ में आ जाए, जिनकी समझ में आ जाए, फिर उनको यही समझ में आता है यार जब इसका फायदा इतना बड़ा है, इसका सवाब इतना बड़ा है। और फिर एक आलिम, पता नहीं उसका फैज आगे, ये चेन रिएक्शन है। वो आलिम बन गया, उसने 100 आलिम बना दिए, फिर वो बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे। ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा और उसको फायदे मिलते रहेंगे। मौज है उसकी लगी हुई। अल्लाह ने उसको पैसा दिया, वो स्मार्ट था, उसने सही सोचा, सही जगह पे लगाया। तो अगर आपको अल्लाह ने पैसा दिया है तो फिर आप स्मार्ट बनो। अल्लाह के रास्ते में भी देना है तो ऐसा दो, ऐसा दो। मैं दीगर चीजों से मना नहीं कर रहा हूं, लंगर में भी दो, खाने भी खिलाओ। बाकी जो रसूमात है अहले सुन्नत की, कभी मिलाद हो गया तो कभी उर्स हो गया तो कभी 11वीं हो गई तो कभी फातिहा हो गई,
उसमें भी हम लंगर खिलाते हैं, हम लंगर खाने खिलाने वाले लोग हैं, उसमें भी लगाओ। मैंने ये कहा है कि आपकी सबसे बड़ी डोनेशन इल्म की तरफ आनी चाहिए, जामियातुल मदीना की तरफ आनी चाहिए, हमारे दारुल उलूमों की तरफ आनी चाहिए। फिर देखिएगा कैसा बड़ा इनकलाब आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जामिया लेंस में चल रहा है ना, आप जानते हैं ना, यू नो अबाउट इट। जामियातुल मदीना इन लेंस प्रोड्यूसिंग उलमा। Alhamdulillah, this year we producing 16 ulama. Be happy and be proud that your Dawat Islami is doing this wonderful work in South Africa. Almost over 70 ulama have been produced already. जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ये जो हमसे चंदा लेके जाते हैं ये कोई काम भी करते हैं कि नहीं करते, ये बड़े काम करते हैं। ये 70 उलमा से ज्यादा जो फारिग हो चुके आज तक, ये ऐसे नहीं हुआ है। आपने जो चंदे दिए हैं ना, ये उसका इस्तेमाल हुआ। So Alhamdulillah, the good news is that there will be graduation of these 16 students on this Sunday. Program will start 9:30 in what area? Image Lifestyle Hall. Image Lifestyle Hall, just at the end of Mint Road. So it's nearby. A lot of people live nearby, so you can take a walk and come. Come with the family, bring children, bring wife, so they can also see, you know, when children are being graduated, their turban is being tied up, and they are being watched on Madani channel live all over the world. How proud they make the entire ummah. So your wife might tell you, let's make our son alim as well. अब उसको दिखाएंगे तो उसका ज़हन बनेगा ना, क्योंकि बच्चों के मामले में वाइफ की ज्यादा चलती है। तो दिखाओ उनको, उसके फायदे नजर आएंगे, बयान होंगे, लेक्चर होंगे, चीजें समझ में आएंगी। So I am inviting all of you with family, and Alhamdulillah, the Lion of Attari, निगरान शुरा हजरत मौलाना अलहाज इमरान अत्तारी सल्लम अल बारी is coming and he will give the lecture. तो नेक है, अल्लाह के बंदे हैं, उनकी भी ज़ियारत करें, उलमा फार इनको सपोर्ट करें। They need that support. They have sacrificed so many years to study ulama so they can help the Muslim community. So it's the responsibility of Muslim community to come and support them. उनकी सपोर्ट करें, उनको दिखाएं कि तुम्हारे आलिम होने पर हम खुश हैं। वो कैसे होगा? अगर आप आओगे ही नहीं तो उनको लगेगा ये कौम खुशी नहीं। इस कौम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आलिम बने या कुछ बने, लेकिन अगर आपकी तादाद आती है, देखते हैं इतने लोग आए हैं हमारी ग्रेजुएशन को विटनेस करने के लिए, तो ये अप्रिशिएट करते हैं, ये खुश हैं, मुस्लिम उम्मत खुश है। आपकी सपोर्ट से उनका जज्बा और बढ़ेगा और दीन की खिदमत करेंगे। वरना कई हैं जो आलिम बन जाते हैं, वो कहते हैं यार हमें कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, वो जाके दुकान खोल लेते। अरे 7-8 साल पढ़ के क्या तुमने दुकान ही खोलनी थी? दीन के कामों में कितनी जरूरत है उस, लेकिन वो समझता है मुझे कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, लिहाजा मैं ठीक है, मैं दुकानदार ही ठीक। तो दुकानदार तो एक जाहिल आदमी भी दुकानदार बन सकता है, उसके लिए आलिम होना जरूरी है क्या? आलिम तो इसलिए बना था कि मस्जिद संभालता, मदरसा संभालता, दारुल उलूम संभालता, बयान करता, मुस्लिम उम्मत को रहनुमाई देता। उलमा को वेस्ट होने से बचाओ, उनकी हौसला अफजाई करो। सो इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू सी यू ऑन संडे। आएंगे ना?
Will you attend, inshallah? On Sunday, it's about 9, 10 o'clock, start coming. I know a lot of people, they still have their shops open, Sunday business भी चलता है. एक दिन थोड़ी कुर्बानी दे दो यार. बहुत बड़ा मकसद है. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. जज़ाकुमुल्लाह.